Welcome students. Myself Kavita Kobane is going to present the fourth video of the 10th standard maths 2 Pythagoras theorem chapter number 2. Exercise means practice set number 2.1 question number 7 to 10. In the previous video we have solved the question number 6 till question number 6 and the theorems we have explained in that. Now we will start with this exercise. Now the question practice set number 2.1 question number 7 we have to solve in this video. Now see in the diagram it is given triangle is given to you, right angle triangle is given, and in that right angle triangle the F angle is 90 degree. It means DFE it is given as 90 degree, and what else is given here, that FG is perpendicular to ED. ED is the hypotenuse, here it is. And the second thing is given GD is given 8 units. So here the GD is given 8 units, FG is given how much? 12 units it is. Now the three questions are asked to us. First one is the EG, second one is the FD, and third one is the EF. First of all, we will just think over it the EG first. In the diagram, if you will observe it, this is the EG, it is, we have to find it out. So by observing the figure, you will come to know right angle triangle, altitude and the altitude and the hypotenuse. So it means we can use here the geometric mean theorem. So geometric mean, according to that, what it will come here, FG square is equal to DG multiplied by GE. That we will write down it first. Like this we have to write down. What is given that we have to write down. As in the previous video it was told that if you will write the given things, it is convenient for the examiner to just go through it and easy for checking also. So here what is given, the triangle, the angle, and then which theorem we are going to use, that is a geometric theorem. So according to geometric theorem it is, that is the altitude square is equal to the hypotenuse. It is get divided into two parts, that is DG and EG. So that it is here. Now we have to put the values. So FG's value is how much? FG is 12. So it is 12 square. And how much is DG given? DG is given 8 and EG is not given to us. So it will remain as it is. So 12 square is how much? 144. And here 8 multiplied by EG. So here the 8 will be transferred. It will come 144 divided by 8 is equal to EG. Okay, so 144 divided by 8, what the answer will come as? 18 8s is 144. So here 8 1s are 8, 8 18s are. So answer we got it as EG is equal to 18 units. So this is the first, we got it. Okay, now we have to think over the second one. Second one is the FD. So if you will observe the diagram here, FD we have to find out. We can take this triangle. What is this? This is DGF. This is 90. It means this is also 90. So it means this is the right angle triangle. These two sides are there and this is the hypotenuse. So by Pythagoras theorem, we can just solve this one also. So here it will come DF square is equal to DG square plus GF square. We write down it first. See, like this we have to write down. What is given? Which triangle we have considered? DGF, and in that which is the 90 degree? DGF is 90 degree. Which theorem we have used? The Pythagoras theorem. The statement will be put it like this. That is FD square is equal to DG square plus GF square. Now put the values. We don't have the FD here. Okay. Then DG is given to us. DG was 8 square and GF was 12 square. Here FD square will remain as it is. So 8 square is 64 plus 12 square is how much? 144. Here the answer will come as 208. So FD is equal to 208. So if you will transfer this, it will become square root of 208. Now you know that how to find out the square root of this number. So it will come as 16 13s. 16 multiplied by 13. The answer 16 square is, square root of 16 is 4 and it will be 4 under root of 13. So FD we got it here. FD is how much? 4 under root of 13. So that is what the second we got it. Now the third we have to find it out. Third question was, that is the EF. Here it is EF. Now if you observe the diagram again here, you will get here again the right angle triangle. Here 90 degree it is. And this right angle triangle, in this we got it as a 12 already given, and EG we found it out. EG was how much? 18. So by considering this right angle triangle, we can find out the
EF. We will write down this given first. See the given we have written like this. The triangle at which it is 90 degree, that we have written, which theorem we have used, that we have written, and according to the theorem the statement is written. Now you can observe the diagram in your textbook carefully. You will understand that which triangle we have taken. So in that the EF is the hypotenuse and other two sides square I have written. I put the values over here. 18 square it comes as 324. And 12 square that is 144. So here EF square it is. When you do the addition it will come as 468. So here EF square, here EF, the square we will be transferring, it becomes square root of 468. And prime factor method or whatever you is convenient, according to that you just find it out. It will come as 6 under root of 13. So EF we got it as 6 under root of 13. So here the second one, here the third one, and the previous one we got, the first one we got it here. Like this we have to solve the question number 7. Now we will move on to the question number 8. Now the question number 8, it is written. See, I have wrote in the notebook. Okay, in the textbook it is given. Just a diagram I have drawn, so I have did in the notebook. Find the diagonal of a rectangle whose length is 35 centimeter and breadth is 12 centimeter. Always you should understand the question first, then only you will be able to solve it. So here it is given the diagonal of a rectangle. Rectangular figure like this. It is not like a square you should draw. The rough figure we have drawn. So this is a rectangle and diagonal means the line segment which is joining the opposite points. So here the diagonal is there. Now what it is given, length is 35. So the longest side is length, that is 35 centimeter. Breadth is how much? 12 centimeter it is given to us. What we have to find it out? The diagonal we have to find. As we know the properties of a rectangle, all the angles are 90 degree or right angle. So here the triangle will be formed PQR. This is a right angle triangle and which is a right angle at Q. So by Pythagoras theorem you can find out the PR here. Okay, so you have to write down the triangle first. What is given here? The triangle, which triangle you have taken? PQR. At angle Q it is given 90 degree. So by which theorem you have taken? By Pythagoras theorem. So you have to write down the statement here, that is PR square is equal to PQ square plus QR square. Put the values and you can get the answer. So this is for you. Move to the next question, number 9. Okay, I have directly drawn the diagram in the answer sheet in my notebook, and I have just written the statement here. So in your textbook, if you will go through it, the question is given there. The diagram like this, it is given to you. It is given that PRQ is 90 degree. Here the PRQ, it is already given the 90 degree it is. Then the statement you have to prove it. What you have to prove it? PQ square plus 4PM square minus 3PR square. Now when this type of questions it comes, you have to observe the diagram very carefully, and what is given in that you have to see. First what they have asked, PQ square. So PQ square, how you will get it here? See in the diagram, this PQ we want and it's square. So it is PQ means it is a hypotenuse of which triangle? PRQ. PRQ we have to take it. In that we will get the PQ square is equal to PR square plus RQ square. One thing. Second, what it is asked, that is PM square they have asked. 4 and all these things we will see it afterwards. But what they have asked, 4 PM square we want. So PM square, if you see here, the PM is there. Again PM is again a hypotenuse. For that, which triangle we have to consider? PRM. PM square निकालने के लिए हमें ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करना है. सो PM स्क्वायर भी मिलेगा. PM स्क्वायर का क्या मिलेगा? PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर मिलेगा. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पूछा है उन्होंने PR स्क्वायर. PR स्क्वायर आप देखोगे तो PR इट इज कमिंग इन द फर्स्ट ट्रायंगल ऑल्सो, द विच वन वी हैव टेकन PRQ, एंड इन दिस ऑल्सो PRM. दोनों ट्रायंगल में आपको PR स्क्वायर मिल जाता है. सो हमें आइडिया आ गया कि हमें कौन सी दो ट्रायंगल कंसिडर करने हैं. सो फर्स्ट वी विल राइट डाउन व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू सॉल्व. फर्स्ट ट्रायंगल हमने कौन सा एज्यूम किया था? PRQ. उसमें PQ स्क्वायर आपका हाइपोटेन्यूज है. सो बाय PRQ में R पे 90 डिग्री है. पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है. स्टेटमेंट इस तरह से बनेगी. इस स्टेटमेंट को हम नंबर देंगे 1. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज PM.
PM के लिए कौन सा वाला ट्राइंगल हम लेंगे, PRM. Okay, so here we have to write down that in triangle PRM 90 डिग्री कहाँ पे है, R पे है, so that you have to mention it. Angle PRM is how much, 90 degree. Which theorem you are using, Pythagoras. So here write down by Pythagoras theorem. I wrote in short. Okay, now the statement, अभी उसके हिसाब से hypotenuse कितना है, PM square is equal to PR square plus RM square, ये statement बनता है आपका. So you write down here, that is PM square is equal to PR square plus RM square. Okay, this is the statement number 2. Okay, now if you just observe one again, it is already given in the question also that PM is the median. So if it is a median, M is the midpoint, then RM and MQ are equal there. Okay, so if you will write RM, it is half of RQ, that is also correct. So we will write here. So what will change, see, RM ये क्या है, half है RQ की. So we will write like this. So here it becomes RM square. So इसका भी square हो जाएगा. So half into RQ का square लेंगे. Okay, so this will be your question statement number 3. Now this 3, if you will put it in 2, then what will change? Here half, it becomes, what it will become? It will become 1/4, and this is RQ square. So this we will write here, RQ square by 4. So ये हम क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे. इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद ये कैसा हो जाएगा, देखो क्या आएगा यहाँ पे, PM square is equal to PR square plus RQ square by 4. See, equation number 2 की statement, PM, PM, PR, PR, सिर्फ RM की जगह पे हमने क्या किया था, ये मतलब ये RQ by 4 हो गया, तो ये यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट चेंज हो गया. अब ये पूरा इक्वेशन हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू रिमूव दिस 4. सो PM को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4PM स्क्वायर, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4PR स्क्वायर, और इसको करेंगे तो ये 4 और यहाँ जो 4 आने वाला है ये दोनों कट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आपका क्या बचेगा, RQ स्क्वायर बचेगा. ठीक है, अब अगर थोड़ा और ध्यान से आप देखेंगे तो स्टेटमेंट नंबर 1 अगर आप यहाँ पे देखेंगे, स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या दिया था, PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, मतलब ही आपका क्या हो जाता है, PQ स्क्वायर होता है. तो वही अगर हम यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे भी PR स्क्वायर और RQ स्क्वायर अगर ये किया जाए तो वहां पे क्या आ जाएगा, PM स्क्वायर आ जाएगा. ओके, सो PQ स्क्वायर आ जाएगा. सो हम इसमें से क्या करेंगे, एक PR को अलग करेंगे. तो यहाँ स्टेटमेंट देखो क्या हो जाता है, V4PM स्क्वायर इज इक्वल टू 4PR स्क्वायर प्लस, सॉरी 4 नहीं, हमने सेपरेट किया ना, सो ये 3 हो जाएगा, और दूसरा वाला PR स्क्वायर यहाँ पे स्टेबल प्लस RQ स्क्वायर. सो इन दोनों को मिला के क्या हो रहा था हमारा, इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, PQ, PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर. सो यहाँ पे भी PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर का मिला के क्या बन जाएगा आपका, PQ. सो ये स्टेटमेंट देखो, 3PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये 4PM वहीं पे था. ओके, अब हमारे जो रिक्वायरमेंट है इक्वेशन में प्रूफ क्या करना था, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर. सो हम PQ स्क्वायर को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे. ओके, सो ये हो जाएगा यहाँ पे 4PM स्क्वायर, ये इधर ट्रांसफर किया तो ये 3PR स्क्वायर, और ये बचेगा सिर्फ PQ स्क्वायर. सिर्फ इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, ये आ जाता है PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड 1. ये हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पे हमारा ये प्रूव्ड हो गया. ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Now question number 10, it is given here that the walls of 2 buildings on either side of a street are parallel to each other.
अगर हम क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़े और उसके हिसाब से देखा जाए तो वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग्स दिया उन्होंने। सो वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग्स अगर हम लेते हैं तो ऐसे दो वॉल्स लिए हमने, उन्होंने दिया है पैरेलल है, सो लाइक दिस वी हैव टेकन। देन व्हाट दे हैव गिवन, अ लैडर ऑफ 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेज द विंडो ऑफ द बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। मतलब हमने लैडर जो सीढ़ी होती है वो ऐसी रखी है, वो पहली वाली बिल्डिंग के ऊपर टिप तक पहुंचती है, और वो सीढ़ी कितनी दी है उन्होंने, दैट लैडर इज गिवन इज हाउ मच 5.8। नेक्स्ट इट इज गिवन दैट ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, उसको दूसरी साइड में चेंज किया, टर्न किया, इट टॉप्स टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4.2 मीटर। अब अगर उस बिल्डिंग को दूसरी लैडर को दूसरी तरफ किया, दूसरी तरफ टच कराया, तो यहाँ पे वो वही लैडर तो सेम ही है 5.8, और वो कितने हाइट पे जाके टच कर रही है 4.2, और ये कितनी थी 4 मीटर थी हाइट। ओके, देन दे हैव गिवन इन द अदर बिल्डिंग एट हाइट 4.2 मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। मतलब आपको इन दोनों बिल्डिंग के बीच में जो जगह है उसके जो विड्थ है वो हमें फाइंड आउट करनी है। वी विल जस्ट ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, देन वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। See the diagram will be like this only. The first building it is given AB 4 मीटर हाइट की है, उसमें लैडर 5.8 का लगाया था हमने, और सेकेंड वाली बिल्डिंग 4.2 मीटर की, जहाँ पे विंडो तक पहुंचने के बाद सेम लैडर वहां यूज किया गया है। सो डायग्राम इस तरीके से बनेगी। बिल्डिंग रास्ते आपके रोड के साथ परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। ये फर्स्ट ट्राइंगल बनेगा, ये सेकेंड ट्राइंगल बनेगा, और ये दोनों जो है ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये इसकी परपेंडिकुलर साइड है। So now we got the two triangles here, the triangle number 1 and the triangle number 2. So if you can name anything here, I have written here ABC. So triangle number 1 means ABC find out करेंगे आप। ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, तो आपको ये वाला मेजरमेंट मिलेगा। फिर उसके बाद सेम ट्राइंगल नंबर 2 लेना है, उसमें भी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइड 1 प्लस साइड 2 स्क्वायर, आपको ये साइड मिलेगी। इन दोनों को आप प्लस करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, आप जब कभी भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके लिए पहले अंडरस्टैंडिंग और उसका रफ डायग्राम आपके दिमाग में आना ही चाहिए। until and unless you will not get a rough diagram of that figure what is given to you, you will not be able to judge it that which theorem and which solution we have to use it for solving the sums. So you will keep it in mind all these things.